Hello learners, welcome to this live teleconferencing session of Indira Gandhi National Open University. Today we are going to discuss one of the very pertinent topic from your MA Education dissertation, that is tools and techniques used for data collection. Before starting our discussion, let me to introduce myself. I, Dr. Niradhar De, Associate Professor, School of Education, Indira Gandhi National Open University, welcome you all on my personal behalf and on behalf of my school, that is School of Education, to this live teleconferencing session. Friends, today's topic, that is tools and techniques used for data collection, that has been taken from two different or two important courses of your popular program, that is MA Education. The courses, the two different courses are just like MES 016, that is educational research, then MESP 001, that is dissertation. You must have studied the first course, that is MES 016 educational research, in the first year of your MA education program, and if presently you are in the second year, you might be engaged yourself in preparing the research proposal for doing the dissertation work, and if you have already prepared the research proposal, you must have sent it to your concerned regional center for the evaluation and to get the approval of it for doing the research and pursuing the dissertation work. Keeping in consideration of some of the very important aspect of your dissertation work and the theoretical course, that is educational research, which is included in the first year of your program, today I have taken this topic, that is tools and techniques used for data collection. Friends, if you will go through the major task, the major work that you are supposed to do in your dissertation work, and particularly when I focus upon the research methods and research design, what methodology you have to use and how you can design your research work. There you will find there is one important point, that is what types of tools, what types of techniques that you are supposed to use to collect data. Further, you will be analyzing the data that you have collected. Now you see on your screen, if I will specifically focus upon the research methodology, that includes four important aspects of your dissertation work, of your research. First of all, methods of study, what particular research method that you are going to use in your research. Just like it may be a descriptive study, it may be a survey research, it may be a type of experimental research, or it may be a historical or a philosophical research that usually we do in education discipline. So research method means as per the nature of the research problem that you have selected. Here you have to take a decision, or you have to justify that which research method is perfectly fit in your research topic, in your research problem for doing the dissertation work. And the second important aspect that's come under research methodology, that is population, sample and sampling technique. So here friends, for doing a research, if it is a survey type of research or it may be an experimental research, you have to define the area, you have to define the population, that from where you will collect the data. What is the area, what is the location of the subjects or location of the population, from where you will collect data. So here the population, it may be the students, it may be the teacher in education, I am telling in educational context, or it may be the community members, it may be the parents, it may be educationists, and if it is a different types of study, it may be schools, it may be other educational institutions, it may be colleges and other institutions also. So here you have to define that what is the area of your study, from where you will collect your data, and you have to list out the population unit. Okay, so you have to make a complete list of the population unit. If it is the students, then what is the name of the student and in which class he or she is studying,
and from which school. So exactly the detailed data you have to, or detailed listing of the population you have to do. And after doing or after listing the population unit, your next work is to take an adequate sample from the population by using a certain sampling technique, sampling method. It may be probability sampling method, or it may be a non-probability sampling method. It depends upon the nature of the research. It depends upon the objectives and research questions that you have framed. Okay, so that's why defining the population, then defining the sample, and using a definite technique to select a sample from the population is the next important work that's come under the research methodology. And the third important point that is on your screen, you might be watching it, that is tools and techniques for data collection. Okay, this is the third important aspect that's come under the research methodology. So here what you will be doing after defining or after selecting the sample on which you have to collect data, further you have to prepare, or you have to select, if it is already available, you have to select a definite instrument, a definite tool for collecting data. It may be a questionnaire, it may be a type of test, it may be a type of other technique, just like other schedule, just like interview schedule or observation schedule, like that. Okay, so in tools and techniques used for data collection, as a researcher, you have to define it, you have to take a decision that what type of tool is fit for your research, and by using what type of tool you will get the intense you can say data which is required in your study. Okay, so today we are going to discuss on that aspect, on that issue, that is what type of tool you are supposed to use in your research. Okay, further we will be discussing. And another, as I am just putting different aspects that's come under the research methodology. Research methodology is a chapter, you can say. Under this chapter, three important things that I have already said, and another important thing that's called as the statistical techniques used for data analysis. So friends, by using the tools and techniques, you have already collected the data, and your next work is to analyze that data. Okay, so for analyzing the data, you will be using certain statistical techniques, and statistical techniques may be a parametric one, or it may be non-parametric also. It depends upon the research questions and the objectives that you have stated in your dissertation, in your study. Okay, so you might be using measures of central tendency, measures of variability, that's also called as measures of dispersion, or it may be a t-test to know the significance difference between mean scores of two groups, or it may be a type of chi-square test, or it may be other types of statistics also. So here these are the four important things that's come under the research methodology. Now let me to focus upon today's topic that we are going to discuss, that is tools and techniques used for data collection, which is a part of research methodology. Now let us go forward. So friends, when I am talking about the tools and techniques that we are using in research, mostly I am focusing upon two types of tool. You see on your screen, one is called as the standardized tool and other is called as the self-made tool. Okay, so what is the concept of a standardized tool and what is the concept of a self-made tool? Now let us go forward to the next slides so that we'll understand and will differentiate these two concepts. Unless you understand what is a standardized tool and what is a teacher-made tool or self-made tool, you cannot prepare a good tool. So that's why such conceptual clarity you should have. So friends, you see on your screen, for standardized tool, you see it is developed by the test specialist and the experts, whereas the self-made tool, that is also called as a teacher-made tool, which is developed by the teachers themselves. So friends, for research you will find many tools are available in the market, particularly in the psychological associations or in research organization, from where you can just go through that what are the variables that you have selected, that you have taken in your research problem, and for measuring to that
variable what tool you supposed to use. And if particular tool is available in the market, that and which is a standardized one, you should go through the manual and you should find out that whether this is properly standardized or not. Okay, and you can use that tool for collecting data, and that tool or the tool that we call as the standardized tool, mostly that is prepared by the test specialist, and you can say the experts who has in-depth knowledge about different aspects of preparing a tool. And you will find that most of the errors are minimized in a standardized tool, and particularly a definite norm, a definite standard that has been developed in a standardized tool. Okay, and so far as self-made tool is concerned, many a time being a researcher, you might have experienced that the tool which is available in the market is not developed as per the context of your research problem. Though some of the items, some of the components are addressed in the standardized tool, but many a time you will find that many other items that really you want it should be the part of the tool, that items are not there. So in such case, what you can do, you can, as a researcher, you can also prepare a tool keeping in consideration or contextualizing to your particular research, to the research question and the objectives and the hypothesis that you have stated in your research. So that's why a research tool can also be self-made. Self-made means the researcher will develop that tool, and further that tool can also be tried out among a small group of the sample to know how the tool is working in the field. Okay, and to minimize some types of error by doing a type of content analysis or by going through the language part of it and other different aspects also. And another difference between a standardized tool and a teacher-made tool is just like, you can just go through on your screen. It is used upon a large group of population, also in research, whereas a self-made tool is used upon a specific learning situation. And other points, let me to focus, all steps are followed for test development such as establishing reliability, validity, norm, etc. in a standardized tool. But in a self-made tool, simple steps are followed to know the content validity and tryout of the test. And another difference that I can say, mostly the standardized in the standardized tool, the test items are average difficulty in nature, as this has developed for a wide population, whereas in self-made tool, difficulty value of the items may vary, depends upon the standard of the teaching or the instruction. And other difference that I can make here, that is standardized tool is mostly or you can say most of the errors are minimized in a standardized tool, whereas chances of making errors are there in a self-made tool. So friends, to summarize it, I can say if standardized tool is available, you can use it, and if standardized tool is not available, you can prepare a tool contextualizing to your research problem and you can use it. And you see, for standardizing a tool, mostly a large group of population that are being considered for administering the tool, and to know the reliability index of the tool, the validity index of the tool, and further to develop a suitable norm also. But in a self-made tool, there is no need of developing such type of norm. There is no need of going through the reliability and validity part of it, reliability or validity index of it. And if simply you have done the content analysis, and if you have gone through each and every items, that what is the real meaning of that item and what it really intends and what type of data will come from that item of the tool, if such type of analysis you are doing, that's called as a content analysis, to know the content validity, fast validity of the tool, you can use that tool. And I have already said that in a standardized tool, you will find that most of the errors are minimized, whereas in a self-made tool, you cannot say that most of the errors are minimized. There is the chances, there is the possibility to do certain error by using a self-made tool if it is not properly
tried out, properly administered upon a small group of population sample. Now, let me to go through to touch upon what are the different types of tools that you will use for your MA education dissertation work. Many a time you ask question that what type of tool you supposed to use. So friends, you might be discussing with your concerned supervisor in your study center. The guides and supervisor must have allotted to you for providing certain support for preparing the research proposal and the research report. But at the same time, let me to touch upon that what are the very briefly what are the different tools you might be considering for including in your proposal for collecting data. Just like I can say that these are the certain tools that you can be used. That is, one is called as the test, then questionnaire, then rating scale, interview, observation, and checklist. Here you see it is not possible that all types of tool one can use one's dissertation, one's research work. It is up to the research problem, it is up to the research question, it is up to the objectives that you have stated. Many a time by using only a single tool you can conduct your study, and many a time you might be requiring to use two tools. So it depends upon that how many variables you have included in your research problem. Now let me to explain it very briefly what is the real meaning of this type of tool and how you can develop. What is the concept of it? So friends, if I will focus upon the test, which is in a very large scale that we use in educational research. Many a time as a researcher we intend to know the level of performance, the level of achievement of the students in their school involvement, in their school education, or even if in higher education also. So that's why you might be using certain tests, just like I can name achievement test, aptitude test, intelligence test, creativity test, and personality test. These are the broad variables that you might be considering to use in your dissertation work. Just like achievement test, by using an achievement test you can just find out the level of performance, the level of achievement of the students. Okay, it may be a general achievement test, or it may be achievement particularly in different subjects. Just like I can say that achievement of mathematics, achievement of achievement in subject of science, achievement in the subject of language, just like English or Hindi or any other languages. So friends, here you can prepare an achievement test, or you can also select if standardized achievement tests are available for a particular age group, for a particular standard, you can also use it. And for the aptitude test, if you want to know aptitude of the students, let mathematical aptitude of the students, mechanical aptitude of the students, musical aptitude of the students. So how can you do? So for that you can develop certain aptitude test as per the variable that you have included in your research. And if it is available and if it is properly standardized, that aptitude, standardized aptitude, you can also use. And if it is not standardized and if it is not available, you can prepare it. So friends, many a time aptitude test and achievement test, it looks like same, and if you go through the questions, if you go through the items, anyone can be confused that whether the item should be included in achievement test or it should be included in the aptitude test. Aptitude test that measures, that assess the potential abilities or the aptitude of the learners. Okay, and achievement is the further step of aptitude. So it depends upon that what variable you have included. And so far as the nature of questions are concerned in aptitude test, slightly there will be certain difference, and mostly if I talk about aptitude in mathematics and achievement in mathematics, there is certain difference. Achievement of mathematics is based upon a curriculum, certain curriculum, and it is based upon the curriculum that are being practiced in the schools, in the higher education system, because your achievement will be based upon your course that you are pursuing, the curriculum, the syllabus that you are pursuing. But when I talk about aptitude,
So here it is a type of general in nature, just like aptitude or mathematics of standard 9 students. So that means what are the different skills, what are the different competencies, and what are the different abilities that are required to measure aptitude of mathematics in 9th standard. Okay, so it is based upon the developmental characteristics of the individual, or growth and development, the nature of growth and development of the individual, and development of the mental ability. So friends, aptitude is some extent different from achievement, and you can use these two types of tests in your research. And further, I can also give example of the intelligence test, creativity test, as well as personality test. In intelligence test, what you are doing? In intelligence test, if you want to know the level of intelligence of the students, okay, so what you can do? You can use a standardized intelligence test which is available in the market in psychological organization, psychological institute, okay, and you can also develop your own as a researcher an intelligence test. And for that, I may request you to go through MES 016 educational research. There you will find a detailed theoretical construct about the very meaning, the very concept of intelligence, and how intelligence is measured, and what are the different tests can be used, and as a researcher how you can prepare, how you can develop an intelligence test. And further, creativity, how can you know that a particular child is having a particular child is creative or not, and what type of creativity is having with the child. So for that you might be using certain creativity test. Okay, you have to prepare, or creativity test, or standardized creativity test are also available. That also you can use. And further, a personality test. Okay, so friends, I'm just putting the name of all these tests that you will be using for collecting data in your MA education dissertation work. Now let me to go through what guidelines should be set, what guidelines should be followed for preparing a good test, and which test you can say that it is a good test. Just like I have mentioned here some of the important points, just like guidelines of a test. It is developed for a particular age group or standard. As I have already said that if you are going to develop a test of mathematics for class 9th students, so the questions should be, or the concept should be taken, or the knowledge base should address as per the you can say the growth and development, or as per the mental abilities of the 9th standard students, and the age appropriation 9th standard students, I think the age appropriation may be 14 plus. So that's why when we prepare a test, it is developed for a particular age group or a particular standard. And further, question for the test are taken from the content of that standard or age group. I have already said that test questions or achievement questions are based upon certain curriculum, certain syllabi, okay, certain courses that you are pursuing. Just like the students are studying in class 9th, and you want to prepare an achievement test for 9th standard students. So what you will be doing? If it is a general achievement test, then you have to take certain questions from reasoning, certain questions from mathematical ability, certain questions from language ability, certain questions from social science, and certain questions from science and general knowledge also. And particularly, if you are going to prepare a particular test of particular achievement test to know achievement of mathematics or achievement of science, so what you will be doing? So here the questions that you will take from that age group students, from that standard. Let mathematical achievement test for 9th grade students. So here you have to take questions only from mathematics subjects, from different chapters, from different components, from different concepts of mathematics in class 9th. So accordingly you can prepare it. And further, just to point out very briefly the other important aspects as guidelines for preparing a test, that is, time limits are fixed to respond the test. In a test, certain time limits are given. Just like
let 30 minutes, within 30 minutes you have to complete the test. Then for the proper 30 minutes or 1 hour, it is up to you, it is up to the test that what you are going to measure and how many questions are there. Then accordingly you have to justify that how much time it will take to complete the test, and further proper instructions are given to respond the items. So friends, when we are preparing a test, then definitely we provide certain information, okay, certain instruction that how they will attend the items, how they will attend the questions, okay, where they will write the response, and whether the response are or a single type of test items are given or different types of test items are given. So that's why proper instruction you have to give, and that instruction will also specify that what time will be given to the examinees, to the examinee, okay. So whether it is 30 minutes, whether it is 40 minutes, or it is 1 hour, it is up to you, and it is up to your test, it is up to your you can say different questions that you have included in your test. Other important points are just like examinees are usually record the responses on the sheets or the questions that you have provided to them. We get mostly quantitative data by using a test. Test is used mostly in descriptive and experimental research. To analyze a test score, we need the use of varieties of statistics. Try to understand. Let you have used a type of achievement test, or a type of intelligence test, or creativity test, or aptitude test. So the responses that you will get, mostly the responses are quantitative in nature. Means you will get the responses in terms of numbers, in terms of numerals. Okay, just like let in mathematics, a questions you have given, and further you have given certain options. The learners, what they will do, they will go through the question, and they will find out that what is the right answer of it. And in a test, when you are getting the response in terms of numbers, in terms of numerals, further how to analyze that numbers and how to analyze that numerals. So for analyzing that numbers and analyzing that numerals, you will be using certain statistics. Okay, it may be average statistics to know. As example, I can say, just like let as a teacher, what you are doing, you are just after taking an examination, after taking a test, you are just evaluating, assessing, measuring their copies, and you are providing a mark for that. Okay, whether the learners are getting a 60 marks or 62, 65, 70, then accordingly you are just quantifying it. Okay, so for quantifying it, you are using certain technique, and after quantifying it, let in your class or let in research, 100 sample are there, 100 students that you have taken in your study. So what you are doing, let you have used an achievement test, and ultimately after administering the achievement test, you are getting 100 score, and after getting the 100 score, you can just compute it, interpret it, you can just analyze it by using certain statistics. So what you can do, to get the average statistics, to get the mean score, you can add all the individual scores and you can divide it by the total number. You can get the average score. Then accordingly, you can also calculate the standard deviation and other type of statistics also. So friends, today we just discuss one of the tool, that is test. What are the different types of tests you can use for your MA education dissertation work, to collect data for your dissertation work. And in our next session and any other day, we will be discussing other types of tool that you can use for collecting data for your dissertation work. Thank you. Do you wish to be part of a television studio like this or any other media system?
are already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism and New Media Studies. Here in the School of Journalism and New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance the media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOGNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. IGNOU employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills. I welcome all the learners and participants to this live TC session on the topic hypothesis in research. In the last video lecture, I have extensively talked about this concept, the hypothesis in research. But then there were some points which we have not covered. So in today's session, we will be taking start from the previous session, then we will be also discussing some other important points which are there in the hypothesis, which as a researcher you should keep in mind when you take any research study. So in today's session, I'll be talking a little bit about the hypothesis very briefly. Then one of the major concepts which you all see when you undertake any research study, especially the quantitative studies, is the hypothesis testing. So the major focus of this session would be hypothesis testing. And when you do hypothesis testing, there are some terms which you will come across when you do that, when you do any hypothesis testing. So the focus of today's session will be on hypothesis testing. In the last couple of sessions we had discussion about the hypothesis, so I won't be much talking about those concepts. So let us start. I would like to invite your attention to the screen. As you see on the screen, see this is
very simple that way. If you undertake any research work, this is how it is going to flow. Your steps, this is how you will move forward, you will do the research work. By that I mean the first step is going to be the identification of the variable or problem. So you will definitely come out with, will formulate a problem, and on that problem you will be working or you will be researching. So that's why, as you see on the slide, it is like written like selecting a variable, then you will be writing the title of your research work, then in continuation to that you will also formulate the objectives or research questions. And both is not that way very much required, either you should have a research objective or research question. So that is going to be the first step. The second step is the formulation of hypothesis, as you see on the slide. So I hope you could make out this is going to be a very important step in the case of what we say research, when you undertake any research work. And I have written it is going to be optional. Sometimes in qualitative studies we don't generally formulate the hypothesis. So that's why you are seeing like it is going to be an optional step. But of course in the quantitative studies, if you are undertaking any quantitative work, it is going to be one of the major steps, the formulation of hypothesis. So that is going to be the second step. The third is data collections. Once you have that objectives and hypothesis, the next task, as you see on the slide, is going to be the data collection stage, which includes many steps like your sampling, what is going to be your population. From population, how you are going to select the samples, then how you are going to collect the data from the samples that you have selected. And in social sciences we usually use the term tools, while in sciences we use the term instrument, while in social sciences it is going to be tool, research tool. Then the methodology, how you are going to collect data, how you are going to collect the data in your research work. So the data collection includes all those. The next is, once you collected the data, the next step is going to be the analysis of the collected data. Once that is done, the final stage is going to be the research reporting or writing of your research work. So that is going to be the fifth step. So if you see, the major steps are, one is identifying the problem, then formulating objectives, and then the hypothesis. Then it is going to be data collection and data analysis, and finally it is reporting. So if you see, when we were discussing about the steps in research, one of the steps I was saying, the second step is formulating the hypothesis. Then we should also understand what is an hypothesis. See, there can have any kind of a tentative guess from your side about the solution of the problem that you undertake. Say for example, I will make it very simple and brief. That way, see, if I am working on the stress and academic achievement of the students, so I can come out with some kind of a guess or a kind of a tentative answer such that the stress may affect the academic achievement of the students. So it can be, maybe it can increase the academic achievement, it can be the other way around also, it can decrease, or there is no relation between stress and academic achievement. So what all things which I was saying, like it can improve the academic achievement, it can reduce the academic achievement. Yeah, there is a relation between academic achievement and stress. So that kind of a guessing from the researcher part is going to be what we call the hypothesis. And in the previous couple of sessions, I have discussed about how the hypothesis has to be generated. There are a couple of ways and bases which you need to consider, when you formulate the hypothesis. You cannot just like for the sake of formulating hypothesis, you cannot formulate the hypothesis that way. So if you see a simple kind of a definition, which is like a tentative solution of the problem, or it is going to be an intelligent guess about the solution of the problem. So this is what the hypothesis. Now if you talk about the forms of hypothesis, as you see on the slide, there are two types. One is the null hypothesis and the other is alternate, or which is also known in the name of directional or non-directional hypothesis.
So what happens, one of the bases for formulating the hypothesis is, say for example, if nobody has conducted any research work on the stress and academic achievement, which is not the case in reality, but if you undertake a study which no one has conducted before, then it is always good to formulate the null hypothesis, because you don't have any clue about how the solution, how the result of your research study is going to be. So in that case, it is going to be a good selection that you formulate a null hypothesis. So if that is the case, in the case of the example which I was quoting, like stress and academic achievement, you will formulate a null hypothesis like there is no relation between, there is no effect of stress and academic achievement. So that no word means null, nothing. So there is no relation between stress and academic achievement. There is no effect of stress and academic achievement. So this is how the null hypothesis has to be formulated. Now, see, in most of the studies, when you formulate a null hypothesis, by default the alternate hypothesis also will follow. But some of the researchers usually don't write that, but by default it will be there. I mean, like when you formulate a null hypothesis like there is no effect of stress on academic achievement, there is no relation of stress and academic achievement, there is no relation between stress and academic achievement, then there is a hypothesis which says there is a relation between the stress and academic achievement. So that hypothesis is going to be the alternate hypothesis. And when you formulate the alternate hypothesis, we can like formulate in different ways, like we can give a direction also. The stress improves the academic achievement, the stress reduces the academic achievement. So that gives a kind of a direction to the hypothesis. So friends, what I was saying is, see, you formulate a null hypothesis, then by default the alternate hypothesis will follow. But there are like researchers where we will come out with what kind of a null alternate hypothesis also. So this is how in general we do when we undertake any research study. So if that is the case, if we have a hypothesis in our study research work, then the next step is going to be the what we call the hypothesis testing. So that's why what you are seeing on the slide depicts it is like hypothesis testing and its purpose. See, what is that? To test whether the null hypothesis, which says there is no difference or no effect between the variables, can be rejected or not rejected. See, this is what the purpose. We have an hypothesis in our study, and we are going to test it. So that step is known to be hypothesis testing. So maybe in the previous lecture I was saying about usually in science subject and all we have the laboratories to do that, but in social sciences we don't have that kind of a laboratory arrangements which would help us to test our hypothesis like the one which I was pointing out. So in that case, what we do, we will depend on the statistical methods, statistical techniques. So basically hypothesis testing is to make to give or to find a decision like whether we have to reject or not reject the hypothesis that we have formulated in the study. If I say one example like the example which I was saying, there is no effect of stress and academic achievement. So whether I can retain that hypothesis or whether I can whether I have to reject that hypothesis, this is this is decided by doing this hypothesis testing. Now if you see the slide which is shown, there are a couple of steps in the hypothesis testing. One of the steps is the first one is hypothesis formulation, which we have already seen. We will go with the null hypothesis or the alternate hypothesis. So first, state your research hypothesis as a null hypothesis and alternate hypothesis. So as I said, in some of the thesis we will not be seeing that, but it follows by default that way.
So we will come out with a null hypothesis in our research work. Then, as I said, the next is going to be the data collection. So we will collect the data in a way designed to test the hypothesis. So there can have variables when we formulate the hypothesis. We also, it is written by including the variables which are there in our study. The example I was saying, like stress and academic achievement. So they are the variables in my study. So in order to collect the data relating to the stress, I have to collect the data. Academic achievement also is one of the variables in my study. So I have to collect the data on the academic achievement also. So that is going to be the second step. The third is a statistical test, as you see on this slide. You decide on the the statistical technique or the statistical test. So that is going to be the third step. Perform an appropriate statistical. You select it and do the statistics. The next is set the level of significance. See, we need to have be aware about something called the level of significance. So that is one of the terms which we need to know, we need to be aware of when you do the research work, when we do specifically the hypothesis testing, that is the level of significance. So when we do the hypothesis testing, we will have one level which would help us to, what we say, decide whether we have to reject or not reject. See, I am purposefully using that word not reject because usually in research work we don't use the word accept. Usually it comes that way, reject or accept. But in research field we don't make use of the word the accept, that word the accept, because there can have, we are not undertaking the research work on a big sample, a couple of selected samples we will be working on. So we cannot that way very much generalize the result that we get from our research work. So usually we don't use the word accept. In place of that, we will use the term not reject. Okay. So reject or not reject. So that rejection or not rejection, or if I put it, like in a casual way, we say reject or accept. That will be decided looking at the level of significance and the next one, the p-value. So we will have a p-value, then we will see the level of significance, accordingly a conclusion will be drawn. So friends, I hope you understood this, the steps in hypothesis, like we formulate the hypothesis, then the data collection stage and the level of significance, p-value, then the conclusion which is based on the calculations which we have made. So that is how the research, what we say, hypothesis testing is done in a research work. Now, if you have listened, I was talking about something called a word called significance. One is the level of significance, then there is something called a significance also. So this is one thing which usually you will see in hypothesis testing. See, usually if I say an example for a survey study like stress and academic achievement, which I am going to undertake, then the hypothesis can be there exists no effect of stress on academic achievement. I would repeat that. See, a hypothesis like there is no effect of stress on academic achievement or stress and academic achievement. There exists no significant effect. So we specifically write that word, the significant. So accordingly, there can have many significance tests in the research field. The statistical test, that is, they are nothing but they are significance test. So that is what you see on the slide. There are many tests of significance or significant tests. See, there are many methods through which the significance can be tested. These are also known as tests of significance or significance test. And you should, take your attention to the, what we say, the point which is given as the second point. In statistics, significance means not by chance or probably true.
Highly significant means highly probable. So as I said, we have an example like there exists no significant effect of stress and academic achievement. There exists no significant relationship between stress and academic achievement. If this is the null hypothesis, then after conducting the research data collection and doing the statistical test, we will see whether it can be rejected or not rejected. So that is significant. If you are coming out with a result like we have to reject the null hypothesis, then that result is going to be significant. This is the most probable thing which comes in my result. This is not by any chance. This is purely because of my research work. So this is going to be true. Again, the opposite case also, if my hypothesis is not rejected, the first one was rejecting. If it is not rejected, if I come out with such kind of a result which says that I cannot reject my null hypothesis, then that is also significant. As a researcher, I would say my result is significant. This is not because of any chance. I have conducted a complete very technically, logically sound research work, and this is going to be true in my research work. This you can generalize, no issue. That is going to be significant. So that's why we use that word significance, and that's how the research hypothesis is also written. Let me again focus on that point. Like if the null hypothesis is like there exists no significant relationship between stress and academic achievement, we put that word significance because this is not because of any chance I am getting this result which makes me to reject the hypothesis. This is not because of any chance. This is purely because of my research work, and this is going to be a true result. And same with the case of not rejecting the hypothesis also. So if you see in research, you will see many what we kind of significance tests like t-test, ANOVA, correlation, regression, and there are many such significance tests. Now, I also invite your attention to the slide which is shown. We have also, I was also talking about something called the level of significance. See, what does that mean? See, level of significance, if you see the third point, the level of significance is the measurement of statistical significance. So I was saying significance not because of any chance, it is purely because of the research work, and it is going to be the most probable result. So how we decide that? That we decide looking at some kind of a level of significance, which we also correlate with something called the level of confidence, which I would discuss after this slide. So this is going to be the level of significance determines whether the outcome of hypothesis testing is statistically significant or otherwise. So that level would help us to test the results are statistically significant or not. Now, see, there are 2-3 major levels of significance in research work, specifically in social science research. We fix that level of significance at 1% or 5%. If it is social science research, it is normally at 5%. By that I mean, see, if your result comes out to be rejecting or not rejecting hypothesis, whatever the case may be, if that is the case, if you are fixing the level of significance at 5%, or in other terms we can call it as 0.05 level of significance. If you are fixing the level of significance at 0.05, and if you convert that into percentage, it comes to be 5%. So then it is associated with something called the level of confidence also. So if you are fixing at 0.05 level of significance, then you are 95% sure that, because it is at 5%, if you convert 0.05 level into percentage, it is going to be 5%. Then the remaining percentage, that is 95%, by
I mean, like in research, it means that 95% you are sure that your results are significant. Only 5% you are not sure the result can be something else. If you are fixing the level of significance at 0.01 level, if you convert that into percentage, it is going to be 1%, which means that you are 99% sure that your results are okay. It's going to be absolutely true. Only 1% you are not sure about. So this is how we fix the level of significance. In social science, it is normally fixed at 0.05 level. If it is science researchers, we need very accurate results. Now, if it is a case of a medicine, if you are going to develop a new medicine, we have to be very sure about that medicine will cure some disease. So you have to be very 99%. But in social sciences, we don't need that much accuracy because all those are abstract concepts like motivation, intelligence, stress and all, which we don't, like accurately we can measure all those values. So usually we fix at 0.05 level. Now, the other term is p-value, which is like again a p-value is used in the hypothesis testing to help you support or reject the null hypothesis. See, when you do the significance test like t-test, ANOVA, ANCOVA, regression and all, you will get a value, p-value, and depending upon the p-value, you will decide whether you want to reject or accept the null hypothesis. And it is just like, see, if you have if you put it in a simple words or common example, if you can cite, like you conduct an examination, those who cover or score more than 35% will be put into the pass category. Those who score less than 35 is put into something like the fail category. So that 35 mark is going to be something like a level which will help you to decide whether the student will pass or fail. So it is just like that. And if you want to decide that, you have to conduct the examination and the student has to score the mark. So this p-value is just like that. When you do the statistics, you will get a p-value, and depending upon the level of significance, you will decide whether you have to reject or accept or not reject the null hypothesis. So these are some of the very important points which you would come across when you test a hypothesis in research work. So friends, with this I would wind up this session. We have discussed about hypothesis testing, started with the basics of hypothesis. Then we have extensively talked about the hypothesis testing, the steps involved in that, and some of the major points or concepts which you come across when you do hypothesis testing in the research. So I hope you have understood the concepts and topic that we have discussed today. With this, I would wind up this session. Thank you. Thank you for listening this TC session. Are you a fresh graduate? Do you want to fulfill your educational aspiration by pursuing higher education in various interdisciplinary and multidisciplinary areas like environmental science, environment and occupational health, philosophy, sustainability science, folklore and culture studies? If yes, the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies offers various programs like Master's Program, Graduate Program, Postgraduate Diploma, Certificate and Appreciation Program. The school offers 5 Master's Program. Master of Science, Environmental Science. The eligibility criteria for MSc Environmental Science is Graduate in Science, BTech, BE, Agriculture Graduate, Forestry Graduate and Veterinary Graduate. School also offers Masters in Environment and Occupational Health,
Masters in Sustainability Science, Masters in Philosophy, and Masters in Folklore and Culture Studies. The eligibility criteria for these 4 master's programs is graduate in any discipline. The school also offers various socially relevant and need-based PG diploma programs like PG Diploma in Sustainability Science, PG Diploma in Environment and Occupational Health, PG Diploma in Folklore and Culture Studies, and PG Diploma in Migration and Diaspora Studies. The school also offers PG Certificate in Climate Change and Avshist Prabandhan mein Praman Patra. The school also offers 2 doctoral programs, PhD in Environmental Science and PhD in Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies. The school offers various innovative technologies and multimedia for providing a very excellent student support system. The study material is of high quality. The learner support is provided through Gyan Darshan, Gyanvani, IRC, Swayam Prabha and Swayam channel of IGNOU. For more detail, please log in to IGNOU website. For online admission in these programs, visit school site and also the Samarth online education portal of IGNOU. So please join these programs and fulfill your educational aspiration. नमस्कार लर्नर्स, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन हम बात करेंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के बारे में। बहुत सारे प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक्स का नेचर अलग अलग होता है, लेकिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक ये जिसको हम कहते हैं एकल उपयोग प्लास्टिक, उसके क्या दुष्परिणाम हैं और क्या उसके ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह सेशन CSWM प्रोग्राम यानी कि अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र जो कार्यक्रम है जो SOITS द्वारा ऑफर होता है, उसके अंतर्गत कोर्स BEV 001 से संबंधित है। तो चलिए बात करते हैं एकल उपयोग प्लास्टिक क्या है, क्या इसकी प्रकृति है और कैसे हम इससे होने वाले दुष्परिणामों को कम कर सकते हैं। लर्नर्स, आपने ज़रूर देखा होगा एकल उपयोग प्लास्टिक या सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे और आप नित्य प्रतिदिन इसका उपयोग भी करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम किसी चीज़ को हम एक बार यूज़ करते हैं और फिर हम उसको थ्रो कर देते हैं, या कोई ऐसी प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक के डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं या कॉफ़ी के स्टिरर्स हैं, बहुत सारे आम दिनचर्या में हम बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जो प्लास्टिक से बनी हैं, लेकिन उन्हें हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जो उपयोग है वो इंटेंडेड है कि वो एक बार ही होता है और उसके बाद उनको फेंक दिया जाता है, या तो इसलिए कि वे दूसरी बार उपयोग के लिए नहीं काम में लाए जा सकते, या फिर इसलिए क्योंकि उनका दूसरी बार उपयोग हानिकारक हो सकता है। तो यदि हम इसकी परिभाषा देखें कि एकल उपयोग प्लास्टिक हम किसको कहते हैं, तो एकल उपयोग वाले प्लास्टिक
सिंगल यूज प्लास्टिक या इसको हम डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स भी कहते हैं, एक ऐसा प्लास्टिक है जिसे फेंकने या पुनर्नवीनीकरण यानी कि रिसाइकलिंग से पहले केवल एक बार ही उपयोग किया जाता है. Those substances which are intended to be used only once, which cannot be used for more than one time, they are the single use plastic items. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग हम हर जगह करते हैं. हम अपने घरों में प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं. हेल्थ केयर में प्लास्टिक्स की इम्पोर्टेंस है. इसके अलावा कई सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम प्लास्टिक का उपयोग देखते हैं. लेकिन यह जो प्लास्टिक है वो स्पेशल है क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता है, यह एक बार ही यूज़ होते हैं और उसके बाद इनको फेंक दिया जाता है. अब अगर आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी. बहुत सारे ऐसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं जो आपके जहन में आ रहे होंगे जिनको वाकई में आपने सिर्फ एक बार यूज़ किया और उसको फेंक दिया. उदाहरण के तौर पर जैसे हम डिस्पोजेबल प्लेट्स का यूज़ करते हैं, मग्स का यूज़ करते हैं, स्पून्स का यूज़ करते हैं, कटलरी सारा इसमें आता है. इसके अलावा आप देखिए जो हमारी घर में इस्तेमाल होने वाले जो पदार्थ हैं उनके जो सैशेज़ होते हैं या प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं जिनको हम एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, जैसे कि आपका शैम्पू का बॉटल हो गया या कॉस्मेटिक्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनका कवरिंग जो है वो प्लास्टिक से बना हुआ होता है. इसके अलावा आपने देखा होगा कि सैशे जो आते हैं, छोटे सैशेज़ जिसमें कि आप माउथ फ्रेशनर्स भी होते हैं, उसमें सॉस के पाउचेस होते हैं, शैम्पू के पाउचेस होते हैं. ये जो वस्तुएं हैं जिन्हें हम जाने अनजाने हम यूज़ करते हैं, बहुतायत में इनका प्रयोग होता है, लेकिन उसके बाद जो है वो फेंक दिए जाते हैं क्योंकि आप उसका पुनः उपयोग नहीं कर सकते. तो कौन कौन सी जगह पे हम इसका यूज़ करते हैं? देखिए, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, वस्तुओं की पैकेजिंग, चाहे वो आप जैसे दवाइयों के हम प्लास्टिक का कंटेनर होता है, शैम्पूज़ की अपन ने बात करी, टूथब्रश आपके घर में प्लास्टिक का है, सौंदर्य प्रसाधन की हमने बात करी कि उसकी जो पैकेजिंग वगैरह होती है वो प्लास्टिक की होती है. वो ख़त्म हो गया उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं. इसके अलावा आपका किचन में आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस आपको नज़र में आएंगे जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक, मतलब वो जो प्लास्टिक है जो आपने उसका यूज़ कर दिया तो उसके बाद वो पुनः उपयोग के लायक नहीं है. खाद्य की पैकेजिंग, आपने देखा होगा कि जो विभिन्न प्रकार के खाद्य से संबंधित पदार्थ होते हैं, अब आप मार्केट्स में देखिए, शोरूम्स में देखिए, मॉल्स में देखिए, जहाँ जहाँ पर भी आप देखोगे जहाँ पर किराने का सामान मिल रहा है तो आप नोटिस करोगे इस चीज़ को कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में पैक्ड हैं. और ऑनलाइन डिलीवरी जहाँ तक अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्लास्टिक और प्लास्टिक से जुड़े हुए पदार्थों का यूज़ किया जाता है. जैसे उदाहरण के तौर पर आप ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, जब वो ऑनलाइन आपके घर में आती है तो उसमें आप क्या नोटिस करते हो कि देर इज़ अ लॉट ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेजिंग, इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर विच कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस. इसके अलावा सबसे कॉमन जो प्लास्टिक का यूज़ है विच इज़ अ सिंगल यूज़, दैट इज़ द प्लास्टिक बैग्स ऑफ डिफरेंट साइज्ड माइक्रोन्स जो कि मार्केट्स में अवेलेबल है. वॉट वी आर डूइंग, वी आर कैरिंग सम थिंग्स इन दैट एंड आफ्टर इट्स यूज वी आर इनडिस्क्रिमिनेटली थ्रोइंग दैट प्लास्टिक बैग. हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं सामान को इधर से उधर ले जाने में, हम किसी चीज़ को कैरी करने में. आपने देखा होगा कि वेंडर्स वगैरह हैं, शॉपकीपर्स हैं, फ्रूट सेलर्स हैं, वेजिटेबल मार्केट में बहुत ही लार्ज स्केल पे इन स्पाइट ऑफ द बैन स्टिल एट वेरियस प्लेसेस हम ये नोटिस करते हैं कि प्लास्टिक से जुड़े हुए जो थैलियाँ हैं, जिसको हम आम भाषा में डिफरेंट कलर्स की होती हैं थैलियाँ, डिफरेंट साइजेस की होती हैं. आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि बहुत सारी प्लास्टिक की थैलियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत महीन होती हैं, जिनका माइक्रोन साइज़ बहुत छोटा होता है.
इसके अलावा कुछ ऐसी प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं जिनका थिकनेस ज़्यादा होता है। अब इसका तो थिकनेस वेरी करता है, उसका भी पर्यावरण पे जो दुष्परिणाम है वो डिफरेंट होता है। जो महीन प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं वह पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं क्योंकि वो रिसाइकल नहीं हो पाती हैं, वह हवा और पानी के द्वारा वेग से वो इधर उधर ट्रैवल कर जाती हैं। इसके साथ साथ ही जब उनका color, if it is a different, if the plastic bag is of a dark colored, then it poses more threat to the environment. Why? Because certain chemicals are mixed into that plastic bag to make it look attractive, to make it look more lively, and also to attract, and so therefore that poses more risk to the environment and contributes to pollution. And then along with that, if we make the list, whenever we go out, whenever we eat out, we have a coffee. Now what kind of stirrers we are using? That is a plastic. We use disposable plates when we are moving out, when we are eating out. Where does it end up? That is also of single use. It cannot be used twice. So that also contributes to a maximum level in the single use plastic. तो जितना हम प्लास्टिक जनरेट करते हैं उसमें से 50% comprises of the single-use plastics. So they are very special, they pose threat to the environment, and therefore we must think that why we are using so much of single-use plastic. What is the utility? Why it is preferred? Why it is, in spite of knowing that it is posing so much threat, why it is preferred over other materials? तो कुछ फ़ायदे हैं क्यों हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे देखिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जो शुरू हुआ है वो हुआ है आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सारे मेटल्स महंगे होने लगे, तब एक ऐसा पदार्थ इजाद हुआ जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं। और उस समय प्लास्टिक एक वरदान के रूप में आया क्योंकि उसने कई तरह से सहूलियत पैदा करी। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह सस्ता है। इट इज़ वेरी चीप इन टर्म्स ऑफ इट्स यूज़। सुविधाजनक है, हल्का है। हम इसको क्यों प्लास्टिक का कंटेनर हम प्रेफर करते हैं, क्यों हम अपने घरों में प्लास्टिक से बने हुए, आप देखिए जो टिफ़िन्स हैं, बॉटल्स हैं, कंटेनर्स हैं, बकेट्स हैं, कटलरी है, शो पीसेस हैं, कैरिंग बैग्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। कहाँ कहाँ पे हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि यह सुविधाजनक है, हल्के होते हैं, कैरी करने में आसानी है बनिस्बत उसके कि उसी के तर्ज पे किसी और वस्तु से वह पदार्थ बना हुआ हो। अगर वही सुविधा हमें चाहिए किसी और मटेरियल की तो हैवी हो जाएगा, सुविधाजनक नहीं होगा लाने ले जाने में। और टिकाऊ है क्योंकि इसकी जो ये प्रॉपर्टी है कि वो टिकाऊ है और वो नहीं डिस्पोज होता, यही सबसे बड़ा एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में आप देखिए, कोई भी प्लास्टिक कंटेनर है तो वो वैसा का वैसा ही है, सालों तक आपके घर में अगर है तो वो उसी शेप में, उसी फॉर्म में आपको रहेगा क्योंकि वो टिकाऊ है, वो हमेशा उसी अवस्था में रहेगा। अगर वो लकड़ी का है तो वो ख़राब हो सकता है, अगर वो लोहे का है तो उसमें जंग लग सकता है, लेकिन प्लास्टिक का अगर कोई बॉक्स है तो वो उसी फॉर्म में रहता है। तो ये उसका फ़ायदा है। कम लागत, जैसे कि हमने बात करी कि बहुत ज़्यादा सस्ता है, बहुत कॉस्टली नहीं है, पानी से ख़राब नहीं होता। तो इसीलिए इसका यूज़ होता है दवाएं बनाने में, पैकेजिंग में। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा जहाँ पे भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनकी पैकिंग होती है तो वो प्लास्टिक का कवर कर देते हैं क्योंकि पानी प्रतिरोधी है। और यही इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पानी इस पे लगता नहीं तो ये ख़राब नहीं होता और हल्का है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ के कारण प्लास्टिक जो है वो एक बहुत कहना चाहिए कि एक नेसेसरी एविल है। इसका इतना जगह पे इस्तेमाल होता है कि अगर प्लास्टिक नहीं हो तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, आपने देखा होगा हेल्थ केयर में सिरिंजेस है, मेडिसिन की पैकिंग में, हर जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बिना जो है वो जीवन संभव नहीं है। जैसे
हमने देखा था कि कैसे कोई ऐसी डिजीज़ेस होती हैं जो कि कम्युनिकेबल होती हैं, तो उनको रोकने में प्लास्टिक हेल्प करता है क्योंकि इन्फेक्शन नहीं फैलता। आपने एक बार यूज़ किया, फिर आपने उसको थ्रो कर दिया, तो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज़ करने में प्लास्टिक से जुड़े हुए सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का योगदान है। और तभी हमने देखा है कि महामारी के समय में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का चलन, उसका उपयोग और भी बढ़ गया था, क्योंकि इन्फेक्शन का डर रहता है, इन्फेक्शन न हो, इसलिए हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जो सिर्फ एक बार यूज़ हो और फिर हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। और इससे अलावा फूड का स्टोरेज में, फूड स्टोरेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर फूड का स्टोरेज नहीं होगा तो बहुत टन्स जो फूड है वो वेस्ट हो जाएगा। तो जो खाद्य की सुरक्षा, खाद्य से जुड़े हुए जो सब्सटेंसेस हैं, उनकी लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी के लिए प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक से अगर वो कवर है तो उसमें किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता, किसी भी प्रकार से मॉइस्चर नहीं लगता, हवा का उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है और इस वजह से वो ख़राब नहीं होता। अगर प्लास्टिक नहीं होता तो हम कई तरीक़ों से, खाद्यान्न से संबंधित और हेल्थ केयर चिकित्सा में हम कई प्रकार की परेशानियों का सामना करते। लेकिन प्लास्टिक एक वरदान है यदि उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। तो ये प्लास्टिक ही है जिसके कारण कि हम कई चीज़ों को सुरक्षित रख पाते हैं, दवाइयों को सुरक्षित रख पाते हैं। अपना खाद्य संकट से अगर हम आज बच पा रहे हैं तो वो सिर्फ प्लास्टिक के कारण। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय क्या है कि इतना सब कुछ होते हुए भी हम इसको नेसेसरी एविल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पर्यावरणीय संबंधी दुष्परिणाम देखे गए हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जब एक बार यूज़ हुआ और उसके बाद वो फेंका गया तो वह पर्यावरण में उसी अवस्था में रहता है, वह डिग्रेड नहीं होता और इसके कारण वह कई तरीकों से पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण कॉज करता है, जलीय जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है, स्थलीय जीवों की जो स्वास्थ्य है उसको नुकसान पहुंचता है और अल्टीमेटली हमारा अपना जो स्वास्थ्य है वह भी प्रभावित होता है। क्योंकि यह डिग्रेड नहीं होता है, इसी अवस्था में रहता है, तो ये कभी भी प्लास्टिक जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता लेकिन ब्रेकअप हो जाता है। इसका मतलब यह कि वो छोटे छोटे महीन कणों में विभक्त हो जाता है और प्लास्टिक के ये महीन कण कहलाते हैं माइक्रोप्लास्टिक। स्टडीज़ ये कहती हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो एंटार्क्टिका पर भी मिले हैं, जहाँ पर कि कोई आबादी नहीं है, जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स की उपस्थिति दर्ज हुई है। हवा में माइक्रोप्लास्टिक्स है, खाने में माइक्रोप्लास्टिक है, पानी में माइक्रोप्लास्टिक है, क्योंकि इतना प्लास्टिक का चलन है, इतना प्लास्टिक फेंका जाता है और वो पर्यावरण में इसी अवस्था में है, लेकिन वो छोटे छोटे अंश में विभक्त हो जाता है। तो इसके कारण स्थलीय जीव जंतुओं को उनके जो भोजन है उनके द्वारा उनमें प्रवेश करता है, फिर उनके द्वारा मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है और कई प्रकार के रोग इस कारण हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्लास्टिक, क्योंकि कई जगहों पर प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान के लिए उनको जलाया जाता है, तो जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो उससे वायु प्रदूषण होता है। और प्लास्टिक्स का जो मैन्युफैक्चर होता है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जब चाहे सिंगल यूज़ प्लास्टिक हो या मल्टीपर्पस यूज़ प्लास्टिक्स हो, यह बनते हैं पेट्रोकेमिकल्स से, यह बनते हैं फॉसिल फ्यूल से। तो जितना प्लास्टिक का उत्पादन होता है, इसका मतलब उतना फॉसिल फ्यूल्स को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उतना ही ऑयल वगैरह इसमें, पेट्रोलियम वगैरह इसमें लग रहा है, जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का एक बहुत बड़ा कारक है। ये कहा जाता है कि अभी तक 1950 के बाद में 8.5 बिलियन मेट्रिक टन्स
प्लास्टिक प्रोड्यूस हुआ है, जिनमें से आधा पिछले 15 सालों में हुआ है। तो ये यह दर्शाता है कि विगत कुछ वर्षों में प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ा है, जो कि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट या हम कह सकते हैं जिसको कि ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन, इन सब में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और यह माना जा रहा है कि 2050 तक एकल उपयोग प्लास्टिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 5 से लेके 10% हिस्सा ले सकता है, जिसकी समस्याओं से हम सब भली भांति परिचित हैं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के बहुत सारे नेगेटिव या कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस हैं, जिसके बारे में हमें सोचना शुरू करना होगा और हमें ऑल्टरनेटिव्स देखने होंगे कि किस प्रकार से हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है उसको हम कम करें और बजाय इनके कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हों जिससे पर्यावरण को क्षति ना पहुँचे, मानव स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुँचे। तो ये जैसे कि बात करिए कि आपने ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा कि ये कहा जाता है कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से अधिक मात्रा में प्लास्टिक होगा बाय वेट। इतना प्लास्टिक जो है वो समुद्रों में पहुंच रहा है या फिर लैंडफिल्स में है। लैंडफिल्स वो होती हैं जहाँ पे भी प्लास्टिक कई समय तक, कई वर्षों तक उसी अवस्था में रहता है और इस तरह से बाकी जो इकोसिस्टम्स हैं, बाकी जो हवा है, वायु है, जो मृदा है, उसमें जाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और ये भी हम जानते हैं कि इसका विघटन के दौरान, ये हम अभी बात कर चुके हैं कि जब ये विघटन की प्रक्रिया जब होती है प्लास्टिक की, तो कई प्रकार के जहरीले रसायन निकलते हैं। क्योंकि प्लास्टिक को जब एक विशेष आकार दिया जाता है या उसको सख्त बनाया जाता है कि जिससे कि इसका भली भांति उपयोग हो, तो उस समय कई प्रकार के हानिकारक जो है वो केमिकल्स निकलते हैं। और यह केमिकल्स निश्चित तौर पर अगर वो पर्यावरण में है, वातावरण में, हवा में, सॉइल में, कहीं पर भी हैं, तो अंततोगत्वा वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जब हमारे शरीर में है तो विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं और इससे लॉन्ग टर्म जो है वो हमें हमारी काम करने की एफिशिएंसी, हमें विभिन्न प्रकार के रोग होना, यह सब चीज़ें बहुत ही कॉमन पाई जाती हैं। तो कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं, कई प्रकार से आपने ज़रूर सुना होगा कि प्लास्टिक जो बैग्स हैं उनका बैन लगाया गया है। तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जो संशोधन है 2021 में आया है और उसमें जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि थिकनेस जो होती है प्लास्टिक थैली की, वो थिकनेस जो है वो 50 माइक्रोन से 75 माइक्रोन की गई है और दिसंबर 2022 के बाद में 150 माइक्रोन का साइज वाला प्लास्टिक का जो थैली है वही उसी को कह सकते हैं कि वही काम में ली जानी चाहिए और प्रतिबंधित है इससे कम साइज़ वाली प्लास्टिक की थैली को यूज़ करना। और जुलाई 2020 से हमने कुछ प्लास्टिक आइटम्स हैं, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिंगल यूज़ प्लास्टिक कंसर्न है हमारी, तो कुछ प्लास्टिक्स पे जुलाई 2022 से कंप्लीट बैन है। तो वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे कि आपने देखा होगा प्लास्टिक के जो स्ट्रॉज होते हैं, स्ट्रॉ हम यूज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने में, उस पे बैन है। आपने नोटिस किया होगा कि अब वो जो है वो कागज़ के अवेलेबल है, प्लास्टिक के यूज़ नहीं कर सकते। बैलून्स जो होते हैं उसकी जो डंडी होती है प्लास्टिक की, वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। ईयरबड्स जो होते हैं उसमें जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के जो झंडे जो होती है उस पर बैन है। सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक के गिलास हैं, प्लेट हैं, उस पर बैन है। आपने ज़रूर देखा होगा इनविटेशन कार्ड्स में, मिठाई के डब्बों में प्लास्टिक की लेयर होती है पतली, उस पे बैन है। बिस्किट चिप्स वगैरह के जो सिंगल यूज़ पैकेट्स हैं उस पे बैन है। आइसक्रीम स्टिक्स, थर्मोकोल जो सजावटी सामान आता है, तो इस तरह से बहुत सारी वस्तुओं पर बैन लग चुका है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का पर्यावरणीय प्रभाव है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव है, पर इसके साथ साथ ही यह भी देखा गया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स की रिसाइकलिंग कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, या तो उसकी नहीं हो पाती है क्योंकि उसका सेग्रीगेशन बहुत मुश्किल है, अगर होती भी है तो वो
इट इज़ मोर कॉस्टली। सो इस प्रकार से कई सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को बैन कर दिया है। तो अब हमें यह देखना होगा कि हमें आगे क्या करना है। सरकारों द्वारा कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन अब ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक इंडिविजुअल एक्शन, कलेक्टिव एक्शन सभी की ज़रूरत है, तभी अभी हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स एक तरह से एक एविल है। भले ही वो सुविधा देते हैं, लेकिन इनका निरंतर उपयोग हमारे पर्यावरण में इनकी संख्या को बढ़ा रहा है, और इनसे होने वाले जो दुष्परिणाम हैं प्रदूषण के तौर पर, हमारे स्वास्थ्य के तौर पर, ये हम सभी देख चुके हैं। तो इस आधार पर एक मुहिम चलाने की बहुत आवश्यकता है। हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार से हम खुद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह बिहेव करें, और हम ये देखें कि हम इन प्लास्टिक से जुड़े हुए जो आर्टिकल्स हैं उनको न यूज़ करें। इसके बजाय हम अपने लेवल पे सोच सकते हैं कि कैसे हम इनसे जो जुड़ी हुई वस्तु हैं उनको हम उसके अलावा हम क्या ऑल्टरनेटिव्स देखें, हम कैसे दूसरी चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। हम क्यों ना हम प्लास्टिक से बैग्स वगैरह उनको यूज़ करना बंद कर दें, क्यों ना हम प्लास्टिक की कटलरी को जो है वो यूज़ ना करें, बजाय इसके कि हम अपने स्पून्स वगैरह हैं या फॉक्स वगैरह हैं वो खुद जो है वो अपना साथ लेकर चलें। हम अपने साथ जूट बैग्स कैरी कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल लेवल पर यह देख सकते हैं कि कैसे हम प्लास्टिक्स, स्पेशली सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स जो है, जो कि सिर्फ एक बार यूज़ होते हैं, उनका उपयोग कम से कम करें। तो जागरूकता सृजित करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विशेष तौर पर रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब की मदद से हम यह देख सकते हैं कि कैसे हम इनोवेटिव अप्रोचेस अपनाकर हम ये देखें कि कैसे हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को कम से कम यूज़ कर रहे हैं। कैसे हम ये देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ रिसर्च हो, क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, कैसे इससे होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उनको हम रोक सकते हैं, कैसे हम अपने इकोसिस्टम्स को बचा सकते हैं, कैसे हम स्थलीय जीव जंतुओं को बचा सकते हैं, क्या इससे होने वाले, क्योंकि कई जगहों पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का जो इस्तेमाल है वह होता है, अनिवार्य है, क्योंकि आप मेडिकल में आप देखिए, आप कॉस्मेटिक्स में देखिए, कई जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर न होगा तो उससे चीज़ें खराब हो सकती है। ये भी हमने देखा कि ये ज़रूरी है। तो उसमें क्या हम इनोवेशंस करें, कैसे हम अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करें, कैसे हम स्पेसिफिक प्रोसेसेस को लेकर आए, कैसे हम अपनी मेथडोलॉजी चेंज करें, कैसे हम टेक्नोलॉजी के द्वारा चेंजेस लाएं, जिससे कि वो सारी जो इससे होने वाले दुष्परिणाम हैं वो कम से कम हों। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 है, उसके अंतर्गत सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का उपयोग कम से कम होना चाहिए। तो आज के सेशन में हमने ये देखा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है, कैसे बनते हैं और इसके पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं, और इनका कैसे एक उचित तरीके से ऑल्टरनेटिव्स खोजा जाए जिससे हमें कम से कम नुकसान पहुंचे। धन्यवाद। Do you know that the world's population has reached 8 billion on 15th November 2022? And we are still counting. I don't know where do we go from here. The predictions are scary. Any idea how many people can Mother Earth sustain? India's growing population is a serious concern, and we are soon going to become the world's most populous country.
Wow, number one. Population is, after all, a human issue. The UN proposed Sustainable Development Goals cannot be achieved unless and until we consider the population dynamics. So, here we are. Indira Gandhi National Open University offers appreciation course on population and sustainable development. The course explores the linkages between population and sustainable development. In this course, there are diverse issues related to population, environmental safety, livelihoods, human health, migration, urbanization, and much more. The course duration is 3 months, but of course, you can complete it within a year. The eligibility of the course is graduation from a recognized university. So, if you are a development professional, working in a government sector, researcher, or keen to know अजीज़ तलबा व तलबात और सामाईन आदाब। आज कसीर लिसानी समाज में तर्जुमे की अहमियत इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। OLE 005 ये कोर्स कोड है। सबसे पहले कसीर लिसानी समाज से क्या मुराद है, इस पर बात की जाएगी। कसीर लिसानी समाज से मुराद है, जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि कसीर लिसानी समाज का मतलब ये है कि ऐसा समाज, वो समाज जिसमें एक से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हो, या वो समाज जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ ज़बानों का इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ तक लोग एक से ज़्यादा ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उसके मुतालिक उस समाज में ये महसूस किया जाता है कि ये समाज तरक्की याफ्ता समाज है। ऐसे ही समाज को हम कसीर लिसानी समाज से कहते हैं, यानी कसीर के माने यानी कि बड़ी तादाद में एक से ज़ायद बहुत सारी मुख्तलिफ़ ज़बानों का इस्तेमाल अपनी सहूलतों के लिए करता हूँ। अब कसीर लिसानी समाज में इसकी ज़रूरतें क्यों महसूस होती है? जैसे दुनिया के दीगर जो मुमालिक हैं, उनकी एक कौमी ज़बान या कामकाजी ज़बान या घर के बाहर ज़राए की ज़बान जो होती है वो एक होती है, लेकिन उनके घरों में, अपने घरों में वो अपनी अलग से, यानी कि उसे बोली भी कह सकते हैं, ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड, रसिया वगैरह वगैरह। हिंदुस्तान एक बहुत वसी मुल्क है, बहुत बड़ा देश है। अदबी ज़बान में हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, हिंदुस्तान एक कसीर मुल्क है, यानी कि बड़ा, जिसमें कसीर लिसानी समाज में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली और बाज़ारों में,
घरों में, घर के बाहर, तिजारतों में, दूसरी ज़िंदगी से मुताल्लिक दीगर सरगर्मियों में जो इस्तेमाल होती है। हिंदुस्तान की ये ख़ासियत रही है कि यहाँ दुनिया के बेशतर ममालिक से लोग तिजारती गर्ज से आते जाते रहे हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि जिस मुल्क से ताजिर हिंदुस्तान तिजारत की गर्ज से आ रहा है, उस मुल्क की अपनी कोई ज़बान होगी, और हिंदुस्तान इस मामले में एक बहुत वसी मुल्क है। अगर शुमाली हिंद की बात की जाए, शुमाली हिंद में चूँकि यहाँ इसको हिंदी भाषी खित्ता या हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है, इसमें ज़्यादातर हिंदी में बातचीत होती है। लेकिन इसके बरक्स अगर वही ताजिर शुमाली हिंद ना आकर के नॉर्थ ईस्ट चला जाए, तो चूँकि वहाँ की वो छोटी रियासतें हैं, उनकी अपनी रियासतों की अपनी ज़बान है। अब एक आदमी 2, 3, 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 ज़बानें बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, लेकिन 20-22 या उससे ज़ायद ज़बानों में रब्ता करने के लिए उसको सिर्फ़ और सिर्फ तर्जुमे की ज़रूरत पड़ती है। तर्जुमा आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी बहुत अहमियत रखता है। तर्जुमे के मुताल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक, कौम, तहज़ीब, उनके रस्म व रिवाज, इन सब से वाक़फ़ियत हमें तर्जुमे के ज़रिए होती है। जैसे अगर महाराष्ट्र से या हैदराबाद यानी कि साउथ से कोई मुसाफिर दिल्ली रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर आकर उतरता है, और वो जैसे एयरपोर्ट के बाहर कदम रखता है तो वहाँ के टैक्सी ड्राइवर, ऑटो, स्कूटर वाला या रिक्शा वाले से वो हिंदी ही में बात करेगा, हिंदुस्तानी में बात करेगा। वजह यह है कि यहाँ चूँकि दिल्ली हिंदुस्तान की दारुल सल्तनत है, और यहाँ पर बेशतर यानी कि ज़्यादातर हिंदुस्तानी कामकाज और आवाम की ज़बान है। इसलिए हिंदुस्तान के दीगर सूबों से आने वाले मुसाफिर, ताजिर, अदीब या दीगर अफराद जब दिल्ली या शुमाली हिंद में आते हैं तो उनको मजबूरन या तो हिंदुस्तानी में बात करनी होती है या फिर अंग्रेज़ी ज़बान में वो अपनी बात, अपने दिल की बात कह देते हैं। लेकिन हर एक स्कूटर वाला या रिक्शा वाला इतना तालीम याफ्ता नहीं होता कि वो अंग्रेज़ी में रवानी के साथ बात कर सके। लिहाजा वो इस बात का इशारा करता है कि आप हिंदुस्तानी में बोलिए, और इस अंदाज से वो समझाने की कोशिश करता है, वो ये जाहिर करने की कोशिश करता है कि मुझे यानी कि मैं अंग्रेज़ी ज़बान बोलने में माहिर नहीं हूँ। अब तर्जुमा की अहमियत सूबा दर सूबा पड़ती है। जैसे मध्य प्रदेश में अगर कोई फसल पैदा हो रही है, उस फसल को बड़ी तादाद में अगर वो पैदा हो रही है तो ये तो निज़ाम है कि उस फसल को उसी रियासत में तक महदूद नहीं रखा जाएगा। वहाँ के किसान उसको अपनी रियासत के बाहर बेचने जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह।
अब चूँकि अगर मान लिया मध्य प्रदेश का किसान उड़ीसा में जाता है तो वहाँ की मकामी बोली या ज़बान बोलना या अंग्रेज़ी में टूटी फूटी ही कहे, लेकिन अंग्रेज़ी में उसको बोलना या उसको समझना या समझाना उसकी मजबूरी हो जाती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तर्जुमे की अहमियत यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। कसीर लिसानी समाज में तर्जुमे की अहमियत पर हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे इस पर तहकीक होती रही है, बहुत सारी किताबें तसनीफ़ व तालीफ़ होती रही है। ज़माना कदीम में भी ऐसा होता था। अगर जब यानी कि ज़माने कदीम में जिस वक्त संस्कृत सरकारी या राजाओं की या पढ़े लिखे तबके की ज़बान होती थी, वो सिर्फ उन्हीं तक महदूद थी। उस राजा या उसके वज़रा या दीगर दरबारी जो मुलाजमीन होते थे, वो जब आवाम से रूबरू होते थे तो उनको भी आवाम की ज़बान या उसकी बोली में गुफ्तगू करना होता था। जैसे हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि हिंदुस्तान पर मुसलसल हमले भी होते रहे हैं। मुमालिक गैर के कुछ बादशाहों ने, कुछ राजाओं ने इस पर हमला किया है और उनकी अपनी ज़बानें रही होगी। हिंदुस्तान आने के बाद आवाम से जुड़ने के लिए उन्होंने यहाँ की ज़बान सीखी होगी या इशारे कनाए में बात की होगी। इससे एक ये बात सामने आ जाती है कि उन्होंने भी उस इब्तदाई दौर में तर्जुमे का सहारा लिया होगा, यानी उन्होंने हिंदुस्तान के किसी तालीम याफ्ता फ़र्द को बतौर मुलाजिम रखा होगा और अपनी बात आवाम तक पहुंचाने, आवाम की बात अपने तक लाने के लिए वो बीच में तर्जुमा निगार ही उसकी मदद करता था। इसी बात को जब मुस्लिम हुक्मरान हिंदुस्तान पर काबिज हो गए, उनकी ज़बान अरबी, फ़ारसी, तुर्की वगैरह वगैरह ये कई ज़बानें रही थी, लेकिन वो ज़बानें आवाम पर हावी नहीं हो सकी। आखिर में मुग़लिया दौर में, क्योंकि मुग़लों की जो सरकारी ज़बान, दरबारी ज़बान थी, वो फ़ारसी थी। फ़ारसी कुछ हद तक हिंदुस्तानी आवाम के दिलों पर चढ़कर उसने राज किया। इनके हिंदुस्तानी आवाम ने फ़ारसी में कुछ किताबें तसनीफ़ व तालीफ़ की, उनको पढ़ा और उन फ़ारसी किताबों यानी कि जो ईरान और इराक़ से जो किताबें, उनका अपना सरमाया था, उनकी तहज़ीब, उनका तमद्दुन, उनके रस्म व रिवाज, उन किताबों के ज़रिए हिंदुस्तानी में यानी कि हिंदी में, उर्दू में या मराठी, बंगाली, उड़िया, इन ज़बानों में तर्जुमा हुआ होगा और हुआ भी है। उस तर्जुमे की बदौलत ही हम ईरानी कल्चर, इराक़ के रस्म व रिवाज, वहाँ की तहज़ीब, तमद्दुन, उससे हम वाकिफ़, भली भांति वाकिफ़ हुए होंगे। और चूँकि मुग़लिया सल्तनत जब कमज़ोर पड़ने लगी, तब यहाँ पर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ों का गलबा बढ़ने लगता है। अंग्रेज़ काबिज हो गए और उन्होंने भी तर्जुमे की अहमियत को समझा। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी ज़बान में लिखी गई उन किस्से कहानियों को, उन किताबों को तर्जुमा कराया, यानी जो उनसे क़ब्ल बहुत मुश्किल ज़बान में, मुश्किल भाषा में लिखी हुई किताबें थी और वो आवाम जिसको पढ़ने में दिक्कत महसूस करता था, उसको दुश्वारी आती थी, उसको दूर करने के लिए अंग्रेज़ों ने उन किताबों का तर्जुमा कराया। और तो और उन्होंने अपने अफसरान को भी हिंदुस्तानी ज़बानों से वाक़फ़ियत कराने के लिए यहीं के यानी कि हिंदुस्तान ही के किस्से कहानियों को बिल्कुल सादा सलीस ज़बान में तर्जुमा कराया।
तो बार बार तर्जुमे का जिक्र आ रहा है, यानी कि हिंदुस्तान जैसे कसीर मुल्क में, यहाँ के कसीर लिसानी समाज में तर्जुमे की बेहद अहमियत है। फोर्ट विलियम कॉलेज जम्मू कश्मीर में महाराजा रणबीर सिंह ने तर्जुमे का दारुल तर्जुमा कायम किया। दक्कन में जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, और लखनऊ के नवाबी ने भी अंग्रेज़ी ज़बान में साइंस की किताबों और दिगर उलूम व फ़नून का तर्जुमा यहाँ की मकामी ज़बान यानी कि हिंदुस्तानी में कराया, क्योंकि हिंदुस्तानी से मुराद यानी कि हिंदुस्तान में कसीर पैमाने पर बोली जाने वाली, जिसको हम हिंदी या उर्दू के नाम से जानते हैं, इन ज़बानों में उसका तर्जुमा कराया। इसके साथ साथ बंगाल में बोली जाने वाली बंगला, गुजराती, मराठी, इन ज़बानों में भी साथ के साथ ये तराजिम हो रहे थे। और हम यानी कि हिंदुस्तानी मगरिब के रहन सहन, वहाँ के रस्म व रिवाज, वहाँ की तहज़ीब, उनके तमद्दुन और उनके मयार को तराजिम के ज़रिए हम समझ रहे थे। अब हिंदुस्तानी जो समाज है, इस समाज में यानी कि कसीर लिसानी समाज में तर्जुमे ने एक वो काम करके दिखाया है जो यानी कि 19वीं सदी का आखिर और 20वीं सदी के शुरू में बहुत ज़्यादा तराजिम हुए हैं। जैसे अगर हम एक मिसाल के तौर पर कह सकते हैं कि फ़ारसी में लिखी हुई एक किताब जो किस्सा चार दरवेश से है, उसका मीर अमन देहलवी ने बागो बहार के नाम से तर्जुमा किया और वो आवाम में बहुत मकबूल हो गई। तो ये तर्जुमे की बदौलत ही हम अरब ममालिक के यानी कि किस्सा चार दरवेश ये अरब की कहानियों में आता है, वहाँ से मुताल्लिक है, और उसको जब हिंदुस्तानी ज़बान में वो तर्जुमे के ज़रिए यहाँ बागो बहार की शक्ल में आती है, तो हम उसको पढ़ते वक्त ये महसूस करते हैं कि वही अरब के सीन, वहाँ के दरवेश यानी कि फ़कीर, और वहाँ का रेगिस्तान, रेत, और उन सब का मंज़र हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो एक अच्छा तर्जुमा निगार वही होता है जो आज़ाद तर्जुमा करता है और वो पूरे मफ़हूम को, पूरी मतलब जो नज़रिया है उस किताब का, जो मरकज़ियत है, उसको बरकरार रखता है। ये तर्जुमे के ज़रिए ही होता है। अब चूँकि तर्जुमे में दो ज़बानों, दो तहज़ीबों, दो मुल्कों या दूसरे खित्तों से वाक़फ़ियत होती है, हमें उनकी ज़बान से वाक़फ़ियत होती है। तर्जुमा जैसे अब अरबी ज़बान से लिया जाए, यानी कि तर्जुमे के ज़रिए उन तर्जुमा निगार उन बातों का भी ख़ास ख्याल रखता है कि एक ज़बान जिससे तर्जुमा हो रहा है और जिस ज़बान में तर्जुमा हो रहा है उस ज़बान के अल्फाज की मुमासलत क्या है, और उन अल्फाज का भी वो ख़ासा ख्याल रखता है कि अगर वो लफ्ज़ फ़ारसी से है और वो हिंदी में कुछ उसका तर्जुमा कर रहा है, तो उसको जूं का तू इसलिए कभी कभी उसको इस्तेमाल कर लेता है क्योंकि तर्जुमा निगार ये जानता है कि उसके ज़रिए यानी कि जो तर्जुमा वो कर रहा है उस तर्जुमे में वो लफ्ज़ और जिस ज़बान में तर्जुमा हो रहा है उस ज़बान के समझने वाले, बोलने वाले या पढ़ने वाले उसको ये अच्छी तरह समझते हैं कि इसके माने ये है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो फ़ारसी के अल्फाज हिंदी में इस्तेमाल होते हैं और वो यहाँ का यानी कि हिंदुस्तान का एक गैर तालीम याफ्ता इंसान भी उसको बआसानी समझ लेता है। अब आगे ज़िक्र करेंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तर्जुमे की क्या अहमियत होती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तर्जुमा आज की अहम ज़रूरत बन चुका है। तिजारत व हिसाब किताब के शोबे में देख लीजिए, तिजारत
यानी कि जैसे ही ये तो एक खित्ते वाइज या सूबे के एतबार से मैंने ज़िक्र किया, अगर दूसरे ममालिक के तिजारती भी हिंदुस्तान में आते हैं तो उनको या तो कोई गाइड रखना पड़ता है या उनको तर्जुमे के तय तर्जुमा निगार ऐसा रखना पड़ता है जो उन वहाँ के बाज़ार के भाव या उनके उसका नाम कि हिंदुस्तानी में उस अशिया को क्या कहते हैं, हमारे मुल्क में ये कहते हैं, यहाँ पे क्या कहा जाएगा। तो ये सब तर्जुमा के ज़रिए ही हिसाब किताब या तर्जुमा निगार के ज़रिए उस तिजारती को उससे वाक़फ़ियत हासिल होती है। इससे तिजारत को बढ़ावा मिलता है और उस मुल्क में जिस मुल्क से ताजिर हिंदुस्तान आ रहा है उसकी ज़बान से, यानी कि हम इस बात से वाकिफ़ होते हैं कि हम इस अशिया को क्या कहते हैं। यानी कि चावल को जैसे राइस कहते हैं तो कुछ को मान लिया बहुत कम लोग जानते होंगे, तो अंग्रेज़ी में राइस कहते हैं, हिंदू यहाँ पे चावल कहते हैं, संस्कृत में तंडुल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे, जैसे बंगला में भात कहते हैं। तो उससे ये एक हमें मालूमात हासिल होती है कि दीगर मुल्क की ज़बान में तर्जुमे के ज़रिए ही हम उसको जान पाते हैं कि उसमें क्या कहा जाता है। दूसरा नंबर आता है इसमें इश्तिहारात में। इश्तिहारात यानी कि जिसको एडवर्टाइज कहते हैं, कैसे इश्तिहारात में तर्जुमे की क्या अहमियत है। अब अगर कोई बड़ी कंपनी या कोई आजकल तो एक फर्म जो बड़े बड़े खेती के एग्रीकल्चर के फॉर्म है वो भी अपनी फसलों को बेचने के लिए भी इश्तिहारात देते हैं। तो उस खित्ते के अनुसार, उस खित्ते के मुताबिक, उस खित्ते में, उस सूबे में कौन सी ज़बान आवाम की को सबसे ज़्यादा पसंद है या आवाम उसको बोलता है या पढ़ सकता है, उसी ज़बान में इश्तिहार दिए जाते हैं। अब इश्तिहार भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं तबात और एक होते हैं बरकी। तबाती जो इश्तिहार होते हैं वो होते हैं जैसे हार्डिंग, अखबार, रिसाले वगैरह वगैरह। और बरकी इश्तिहारात होते हैं जैसे रेडियो, टेलीविज़न और आजकल उसकी जगह SMS और मेल ने भी ले लिया, व्हाट्सएप वगैरह। ये बरकी इश्तिहारात में आते हैं अगर कुछ इस पे हम इश्तिहार देते हैं। लेकिन इश्तिहार देते वक्त हमें इस बात का ख़ासा ख्याल रखना चाहिए कि किन लोगों के लिए इश्तिहार हम दे रहे हैं। और अगर हमारी ज़बान उर्दू है और हम उसको हिंदी में या अंग्रेज़ी में इश्तिहार दे रहे हैं तो उसको इस एतबार से हमें उसका तर्जुमा करना चाहिए कि उसको समझने में, उसको पढ़ने में कोई दुश्वारी ना हो। तभी उस जिसके मुतालिक इश्तिहार दिया जा रहा है, कोई जगह, कोई अशिया, कोई सामान, कोई चीज़, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात हो पाएगी। तो दूसरा जैसे बरकी इश्तिहारात, रेडियो, टेलीविज़न। अब चूँकि आज का दौर तरक्की याफ्ता साइंसी दौर है, इसमें अलग अलग सूबों में दूरदर्शन या रेडियाई जो सेंटर बनाए हुए हैं, केंद्र बनाए हुए हैं, उनमें उनकी अपनी मकामी ज़बानों में इश्तिहारात दिए जाते हैं। जैसे बंगला में, और इसका एक बिल्कुल सीधा साधा एक मिसाल ये है कि आप पंजाब में जाइए तो वहाँ के आप टीवी में देखेंगे तो सब इश्तिहारात वहाँ पे पंजाबी में होंगे। वो अगर हम पंजाबी जानते हैं तो उसको पढ़ पाएंगे, चूँकि इसका मतलब ये है कि बड़ी तादाद में पंजाब का जो सेंटर है, दूरदर्शन का जो केंद्र है, उससे वहाँ के लोगों के लिए वो इश्तिहार दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ के लोगों को उसको समझने में, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही अगर कर्नाटका का या आंध्रा का में होगा तो वहाँ कन्नड़ या मलयालम वगैरह में उसमें या तेलुगु में उसमें इश्तिहारात दिए जाएंगे। तो ये इश्तिहार अगर
एक ही एशिया है, एक ही चीज़ है, और उसी का इश्तिहार कन्नड़ में, पंजाबी में, मराठी में, उड़िया में, बंगला में दिया जा रहा है, तो वो तर्जुमे के जरिए ही मुमकिन हो पाता है। यानी कि चीज़ एक है और उसकी कीमत भी एक है, नाम भी एक है, लेकिन उसका जब हम तर्जुमा कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हम किस खित्ते में, किस सूबे के लिए या किस मुल्क के लिए हम इसको भेजना चाहते हैं, या हम उसमें बेचना चाहते हैं, या लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रसाई हो, उसको हम इसी एतबार से उसका तर्जुमा करते हैं। इसलिए तर्जुमे की अहमियत यहाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पे तालीम व तदरीस। तालीम और तदरीस यानी कि हम ऐसे निसाब तैयार करते हैं तालीमी मैदान में कि जैसे मान लिया अंग्रेज़ी निसाब को हम हिंदुस्तान की मादरी ज़बान या मकामी ज़बान या रियासती ज़बान में उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो उस निसाब को, उस सिलेबस को हम उसी मकामी ज़बान में, जैसे बंगला में, मराठी में या हिंदी में, उर्दू में, उसको हम तर्जुमा करके ही उसको उसकी मादरी ज़बान तक उसको रसाई कराई जा सकती है, यानी कि मादरी ज़बान में उसको हम वाक़फ़ियत करा सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं। इसलिए ये तालीम व तदरीस के शोबे में भी ये तर्जुमे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगला नंबर कामकाज, सरकारी कामकाज का आता है। सरकारी कामकाज, चूँकि सरकार के जितने कामकाज, जितने प्रोजेक्ट होते हैं, जितने उसके मंसूबे होते हैं, सब सारे आवाम के लिए होते हैं, और सरकार इस बात का ख़ासा ख्याल रखती है कि आवाम इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो, जो मंसूबे सरकार बना रही है वो ऐसी ज़बान में हो जो आवाम को अच्छे से समझ में आ सके। तो ये सरकारी कामकाज में भी तर्जुमे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सियाहत, सियाहत अगला नंबर सियाहत का आता है, यानी कि ये इंसान की फितरत में शामिल है कि उसको दूर दराज के सफ़र करना, घूमना फिरना उसको बहुत पसंद आता है। सियाहत यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह हिल स्टेशन पे जाते हैं या साहिल के किनारे पर जाते हैं, या किसी ऐसे जैसे लखनऊ शहर हो गया, दिल्ली हो गया, इनकी कदीम इमारतों को देखने जाते हैं, तो वहाँ चूँकि गाइड रखना पड़ेगा, या उसको वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग, मान लिया वो उस सियाहत जो मरकज़ है, वो जो जगह है, उस पर नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा सियाह घूमने आते हैं या रसिया से आते हैं, तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वहाँ पर उनकी ज़बान में या कई ज़बान में वहाँ उससे मुतालिक मालूमात को फ़राहम कराया जाए, और इससे सियाहत को बढ़ावा मिलता है, और दीगर जो सियाह है उनको उसके मुतालिक जो मालूमात है वो भी उनको फ़राहम हो सकती है, उससे वो अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकते हैं। अगला है अदब। अदब में ऐसी नायाब किताबें हैं जो अपने तक ही महदूद है, या जिस अदब में अच्छा दर्स व तदरीस का तो काम हो रहा है, लेकिन वो उनका तर्जुमा नहीं हो रहा है, या वो दूसरी ज़बानों में उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा रहा है, यानी कि तर्जुमा ही नहीं किया जा रहा, तो दूसरी ज़बानों के उदबा या उसको जानने वाले उससे वाकिफ़ नहीं हो पाएंगे। लिहाजा अदब में भी तर्जुमे की बड़ी अहमियत है, तभी तो एक अदब से दूसरे अदब में उसको वाक़फ़ियत हासिल होती है, उसके मालूमात से वो मुतारुफ़ होते हैं। तो अदब में भी, अदब के शोबे में भी तर्जुमे की बड़ी अहमियत है। ज़राए तरसील, ज़राए तरसील यानी कि अखबारात, टेलीविज़न वगैरह वगैरह में, यानी कि इसमें जब नस्र किए जाते हैं प्रोग्राम, तो वो इस बात का ये ख्याल रखा जाता है कि जो तरसील का काम हम कर रहे हैं उसमें तर्जुमा सादा, सलीस और आम फहम ज़बान में होना चाहिए। इसके मुतालिक ये जैसे अब ये ज़राए तरसील में जैसे फ़िल्मों का तर्जुमा करते हैं, तो या तो उसको डबिंग के ज़रिए या उसको ज़ैली उन्वानात यानी कि दूसरे उन्वानात कायम करके फ़िल्मों का तर्जुमा किया जाता है। जैसे दक्कन में बनने वाली साउथ की फ़िल्में और उनका तर्जुमा हिंदी में होता है,
या बंगला में होता है या बंगला की फ़िल्मों का तर्जुमा हिंदुस्तानी में होता है, तो यहाँ भी यानी कि इसमें भी तर्जुमा ख़ास अहमियत रखता है, तर्जुमे की अच्छी खासी अहमियत बढ़ जाती है। कौमी यकजहती और को बनाए रखने के लिए यानी कि तर्जुमा जैसे दीगर ज़बानों से जब तराजिम होते हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों के मुख्तलिफ़ ज़बानों में, और वहाँ के रस्म व रिवाज कौमी ये तर्जुमे के ज़रिए ही मुमकिन हो पाता है और ये कौमी यकजहती को बांधे रखता है। आखिर में हम यूँ कह सकते हैं कि कसीर लिसानी समाज में तर्जुमे की बेहद अहमियत है और ये अहमियत बरकरार रहेगी आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी। इसी के साथ मैं अपने स्पीच को इख्तिताम तक ले जाता हूँ। आदाब।